Hello students, welcome to our YouTube channel. This is lecture 2 in the series of computer science lectures for class 11th. Today's topic is generations of computer and their features. No doubt it is a lengthy topic, but this topic has some very important principles, some very important concepts and terminologies that we must cover. So we will discuss each and everything in very detailed manner. I will explain to you things using real world scenarios. So before we start today's topic, let us have a quick revision of what we studied in the previous lecture. In previous lecture we covered evolution of computers. In evolution of computers we saw how the need of faster and error-free calculation led to the invention of calculating devices. We covered early calculating devices starting from abacus to Mark I, where we covered what were the capabilities of those devices, what were the principles that were behind those devices, who invented those devices, and how those devices contributed to the evolution of computers. We covered von Neumann architecture, in which we saw the concept of stored program computer. In von Neumann architecture we also covered its limitation, which is known as von Neumann bottleneck, where we saw how the single communication channel between memory and processor limits the capabilities of a faster processor. So let's start today's topic, which is generations of computer. When we study generation of computers, we usually skip a very important question. That is, why do we classify computers in different generations? What is the need for dividing the computers in generations? So let us try to understand it. In previous lecture, we saw that computers have evolved over a long period of time. With continuous development of newer technologies, computers are still evolving. Each day there is some new technological development which is adding to the development of computer. Whenever some major technical development takes place which significantly develops the computer or adds to its capabilities, the old existing technology is replaced completely, and this marks the beginning of a new generation of computers. जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है जो कि पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देती है, तो उस सिनेरियो में हम ये मान लेते हैं कि अब जो पिछला जो कंप्यूटर था वो पुरानी जनरेशन का हो गया है और यहाँ से एक नई जनरेशन की शुरुआत हो गई है. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो हम एक तरह से देखते हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कार का भी यूज़ कर सकते हैं और हम बैलगाड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं. पर क्या आप बैलगाड़ी का यूज़ करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि वो पिछली जनरेशन की टेक्नोलॉजी है. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्यों कंप्यूटर्स को जनरेशन में डिवाइड करते हैं और किस वजह से करते हैं और उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होता है. सो वी कैन से दैट बेस्ड ऑन वेरियस स्टेजेस ऑफ टेक्निकल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, computers can be divided into different generations. So let's start with first generation. First generation of computer is considered from 1942 to 1955. Invention of first electronic computer marked the starting of first generation of computer. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उनमें हम केवल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को ही काउंट करते हैं. तो जैसे ही हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, हमने एक नई शुरुआत करी, हमने उसे वहाँ से हमने
कंप्यूटर्स को जनरेशन में काउंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एम्पलीफाई सिग्नल्स। दिस इज़ द पिक्चर that I have inserted in the slide for you. This is the picture of a vacuum tube. So this was the major technology of generation 1. These computers used vacuum tubes to control and amplify electric signals. The vacuum tubes were large in size and consumed a lot of electricity. In the picture you can see that a vacuum tube resembles to the electric bulb. जैसे हमारे पास पहले पुराने बल्ब होते थे 100 वाट के, 200 वाट के, 500 वाट के, कुछ उसी तरह से मिलता जुलता फिगर है हमारे ये वैक्यूम ट्यूब का। These vacuum tubes consumed a lot of energy. ये वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे और हमने हमेशा ये देखा है या हम हमेशा ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो भी डिवाइस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है, उसमें उतनी हीट एमिट होती है। सो दीज डिवाइसेस कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दस दे एमिट अ लॉट ऑफ हीट। एंड a computer could have thousands of vacuum tubes. Thus the size of computer was very large. तो हमने देखा कि एक वैक्यूम ट्यूब है जिसका हमने यूज़ किया था, ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती थी और काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करती थी। अब अगर एक बड़ी सी डिवाइस को हम थाउजेंड्स की संख्या में यूज़ कर रहे हैं एक कंप्यूटर बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। तो कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज, कंज्यूम लार्ज पावर, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल वैक्यूम ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है तो ऑब्वियसली जहाँ पे हम हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हीट को भी एमिट करते थे। कंप्यूटर्स, वैक्यूम ट्यूब्स भी करती थी, कंप्यूटर्स भी करते थे। अब अगर ये काफ़ी ज़्यादा हीट एमिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्हें एक कंटिन्यूस एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और ये डिवाइसेस ऐसी थी कि जो कि टूट भी सकती हैं क्योंकि ये ग्लास में इनक्लोज्ड है, तो इन्हें मेंटेनेंस भी हाई चाहिए थी। यही कारण था कि हर कोई इन कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ बहुत बड़ी कंपनीज ही इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को अफोर्ड कर पाती थी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट डेवलप हुआ और उसका यूज़ हुआ। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कि बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट ही था, उसका डेवलपमेंट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ और उसका यूज़ भी स्टार्ट हो गया था। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, एक ह्यूमन ऑपरेटर, जब तक हमारे पास स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट नहीं आया था तब तक एक ह्यूमन ऑपरेटर कंप्यूटर के साथ बैठा रहता था। वो मशीन लैंग्वेज में 10 की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देता था और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को रियल टाइम में एग्जीक्यूट करता था। पर जब स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आया तो उसके बाद असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ और असेंबली लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो चुका था। सो व्हाट इज़ दिस मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ दिस असेंबली लैंग्वेज, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर्स। वहाँ पे हम जानेंगे कि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होती है, 1010 की फॉर्म में, जहाँ पे हम 2 डिजिट्स का ही यूज़ कर सकते हैं। उन्हें रिपीट करते हैं अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए जो कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को सिग्निफाई करता है। असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, असेंबली लैंग्वेज में हम सिंबॉलिक कोड्स का यूज़ करते हैं, हम कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं, हम छोटे छोटे कोड्स बना लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, उसका हम यूज़ करते हैं और उस लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। यूनिवैक 1 वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है
तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट जनरेशन को मार्क यूनिवैक 1 की कंस्ट्रक्शन नहीं किया होगा, और यूनिवैक 1 फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। अगर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक पूरे जनरेशन को स्टार्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमें ये नाम हमेशा याद रहना चाहिए। द इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स वर यूनिवैक, एनियाक एंड एडवैक। यूनिवैक was first electronic computer, ENIAC was first general purpose electronic computer, and was first stored program computer. So we see here that we have covered the first generation of computers, and let us again revisit this slide and see what are the important topics for our exams. The first very important thing is vacuum tubes. Many times it is asked that what was the major technology used in first generation of computers. So you should know that vacuum tubes were used in the first generation of computers. And why these vacuum tubes were used? These vacuum tubes were used to control and amplify signals. See, in computer the signals are in the terms of voltage of electric signals. अब इस vacuum tube में vacuum tube के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते थे, और यही डिवाइस, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, उस सिग्नल को या तो वो उसे ऑन ऑफ कर सकती थी, या तो उसको उसका मैग्नीट्यूड, उसकी पावर को इंक्रीज कर सकती थी, डिक्रीज कर सकती थी। यही काम था इस वैक्यूम ट्यूब्स का। दिस वैक्यूम ट्यूब was large in size, consume large power and emit a lot of heat, which resulted in the computers being very large, consuming large power, emitting lot of heat, and thus they required high maintenance and continuous air conditioning. Next important thing is, what was the concept developed and used in first generation of computers? So it is not very important, but you should know, you should relate things. If you can relate things, then you can do anything. Stored program concept जो है, ये किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर जॉन वन न्यूमन ने, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और ये कब दिया था? ये दिया था जब हमारा ENIAC का डेवलपमेंट हो रहा था, उसके बाद। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड। मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड बिकॉज इट वाज द लैंग्वेज which is understood by the computer, and assembly language was used because machine language was hard to remember. अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अपने 10 फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर मुझे अभी के अभी बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे? आपको याद ही नहीं होंगे। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई अपने 10 फ्रेंड्स के निकनेम्स मुझे बताओ, तो आपको याद होंगे। इसीलिए हमने असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, ताकि हम एक छोटे छोटे न्यूमेरिक्स कोड्स दे सकें, अल्फ़ाबेटिकल कोड्स दे सकें इंस्ट्रक्शंस को, जिससे कि हमें प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा हेल्प मिले। यूनिवैक 1 was the first electronic computer, and these 3 computers, UNIVAC, ENIAC and ADVAC, are very important, and each one of them is important. आपको इन सब की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और इन सब के पीछे इन सब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म आप खुद देखेंगे और कमेंट में बताएंगे, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। यूनिवैक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस यानी कि जो काफ़ी सारे काम कर सकता है, अलग अलग फंक्शंस कर सकता है। एडवैक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कंप्यूटर था, यानी कि इसमें कंसेप्ट ऑफ मेमोरी था, जहाँ पे मेमोरी में हम प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते थे, और एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हमारा जो प्रोसेसर है वो इस मेमोरी, इस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फैच करके एग्जीक्यूट करता था। Let's move to the next slide. Next is second generation of computers. ऐसा क्या हुआ कि हमें
फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में आना पड़ा? ऐसा टेक्निकल डेवलपमेंट था जिसने कंप्यूटर को इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि हमें वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर्स को डिस्कार्ड करना पड़ा, उन्हें हमने यूज़ करना बंद कर दिया. दिस इज़ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड in the last years of first generation computers. So we see transistors were used in the second generation computers. Transistors were smaller in size. यहाँ आप देख सकते हैं, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा. कभी आपने अगर टीवी को ओपन किया है अपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे अगर आपने देखा है, तो टीवी में कुछ डिवाइसेस होती हैं छोटी छोटी सी, जिनके ऐसे लेग्स होते हैं. इन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं. ये रेडियोज़ में भी यूज़ होते हैं और टीवीज़ में भी आपको मिलेंगे और म्यूज़िक सिस्टम्स में भी आपको मिल जाएंगे. तो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दीज डिवाइसेस वर इन्वेंटेड. ट्रांजिस्टर्स वर वेरी स्मॉल इन साइज़. हमने देखा था कि जो वैक्यूम ट्यूब है उसका साइज़ लगभग एक 1 और 2 लीटर की बोतल के बराबर होता था. आपको पता ही है, आप सब ने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी. और इनका साइज़ कितना छोटा होता था. इनका साइज़ आप लगा लीजिए कि आपके ईयर प्लग के बड के बराबर. जो आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं उसका जो ईयर पीस होता है उससे भी छोटी डिवाइसेस, और उतना ही पूरा काम कर रही हैं. तो आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर्स को. अब ट्रांजिस्टर्स के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि कंप्यूटर्स का साइज़ स्मॉल हो गया. अगर आप 1000 वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ रखें और 1000 ट्रांजिस्टर्स को एक साथ रखें, तो आप देखेंगे कि जो साइज़ ऑफ कंप्यूटर था वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया. कंप्यूटर्स मोर पावरफुल हो गए, क्योंकि हमारे पास अगर स्मॉलर डिवाइस आ गई हैं तो हम उनका यूज़ भी ज़्यादा करेंगे. Less heat emission, since these devices consumed a very small amount of power, negligible amount of power, thus heat emission was also reduced and computers became more reliable. अब ये more reliable क्यों हुए? See, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में एक बल्ब है, उसे आप गिरा दीजिए, तो आप बोलोगे वो तो टूट जाएगा. हाँ, टूट जाएगा. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो हेडफोन है वायर वाला जो आता है, उसे आप गिरा दीजिए, तो आप बोलोगे कि ये मुश्किल से ही टूटेगा. दस जब मूवेबल पार्ट्स हमारे कम हो जाते हैं तो कोई भी मशीन, भले ही वो कंप्यूटर हो या कोई भी मशीन हो, वो ज़्यादा रिलायबल हो जाती है. उसके ज़्यादा समय तक चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो वी सी दैट ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स मेड computer smaller in size, more powerful, less heat emission and more reliable. Magnetic core memories were developed in second generation and magnetic disks were also developed. हमने देखा था कि concept of memory तो हमारा first generation में ही आ गया था. second generation में ये memories all develop हुई. हमारे पास primary और secondary का कंसेप्ट आया, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज का, जिसे कि आज भी हम यूज़ करते हैं रैम और हार्ड डिस्क के यूज़ में, या रैम और सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे कि हम एसएसडी पढ़ते हैं उसके टर्म्स में. तो सेकेंड जनरेशन में जो दूसरा डेवलपमेंट हुआ वो ये था कि मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का डेवलपमेंट हुआ एंड दे वर यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज. एंड द अदर डेवलपमेंट इज मैग्नेटिक डिस्क्स वर डेवलप्ड विच वर यूज्ड एज secondary storage. Next is operating system came into existence. See, when the size of computer became very small and computers became more powerful, now some companies started to purchase computer. In previous generation, in first generation, computers इतने महंगे थे, इतने अनरिलायबल थे और उन्हें इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी कि बहुत ही कम कंपनीज उन्हें अफोर्ड कर सकती थी. इवन गवर्नमेंट्स तक कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी.
तो जब इनका साइज स्मॉल हुआ, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से काफ़ी सारे चेंजेस हुए और कंप्यूटर का यूज़, कॉमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर का यूज़ इंक्रीज़ हुआ। और जब कॉमर्शियल यूज़ होगा तो ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपको कंप्यूटर बेचेगी तो वो आपको सर्विस देना चाहेगी। इफ़ यू आर परचेजिंग अ कंप्यूटर देन you would want to use it in an easy manner. So operating systems came into existence, so that by using this operating system, the purchaser or the buyer of computers could use these computers in an easy manner and efficient manner. High level languages were developed. So this is another very important development of second generation. In second generation, when the use of commercial computer increased, high level languages were introduced. What is the meaning of high level language? Is there any low level language? Yes, there is. Machine language and assembly language are called low level languages, and all the other languages like Fortran, COBOL, Algol and Python, SQL or your C++, these all are high level languages. High level languages मतलब हम इन लैंग्वेजेस में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स में कोड लिख सकते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ऐसे कोड लिख सकते हैं जिन्हें कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग पढ़ के समझ सकते हैं, उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। फिर उस लैंग्वेज का भले ही कोई भी नाम हो, भले ही वो पाइथन हो, भले ही वो जावा हो, भले ही वो फोर्ट्रान हो, C++ हो या फोर्ट्रान, कोबोल और एल्गोल हो। सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रान। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, दैट विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज। So you should always remember that Fortran was the first high level language, and this was developed in second generation of computers. The important computers of second generation are IBM 1401, Honeywell 400. Though there are many important computers, but the chances are very rare that anyone will ask you some of the second generation computers. But still, I would suggest you to remember the name IBM 1401 and Honeywell 400 because they are easy to remember. You can see IBM 1401, the second digit is 4, so you can relate it with the second generation, that 2 into 2 4, and similarly Honeywell 400 you can relate 4 with second generation by multiplying into 2. इट इज़ ओनली सजेशन, आप जिस तरह से याद करना चाहें याद कर सकते हैं, बट आपको आसानी रहे इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप IBM 1401 और Honeywell 400 को थोड़ा सा ध्यान में रखें. So let us cover it once again. In second generation, transistors were the main device. Development of transitions reduced size, computers became more powerful, and other things. Other major development that took place in this second generation, which are the features of second generation computers, are magnetic core memories, magnetic disks, and operating system. And the very important feature or the development that took place during second generation is high level languages. अब इसमें से आपसे दो क्वेश्चन जो हैं वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको रट लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. वी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लाइक इन द फोन्स. सो इफ़ आई आस्क यू, चलो बताओ कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में आया था, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि सेकंड जनरेशन में आया था. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप पाइथन तो पढ़ रहे हो, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो मुझे ये बताओ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुआ, तो आप बताओगे सर हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था. नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. In third generation of computers became much smaller, much faster, much reliable and less expensive. But why?
because of this device. The device you can see in the picture is an integrated circuit or an IC. So integrated circuits were used in third generation of computers. In the last years of second generation, ICs were invented, and these ICs once again proved to be the technical development that led to the shift in generation of computers. But how and what is an IC? The principle behind an IC is to join the components and embed them in a single chip so that many of the transistors could be embedded in a single chip. In second generation, we saw that how transistors replace the vacuum tubes, and in third generation, many transistors counting from 10 to 100 transistors were embedded in a very small chip called integrated circuit. A single IC chip, which is as same size as of the transistor, could do the function of 10 to 100 transistors alone. Thus, the computers became much smaller, much faster and much reliable, because now we has less components to be embedded in a circuit, and thus movable parts reduced much less. Thus size of memory also increased, because now we could use IC in place of transistors, less power consumption and less heat emission, which is an ongoing trend when there is a shift in generation of computers. Along with IC, the other major developments were the introduction of mainframe computers and mini computers. In previous generation, we saw that the commercial use of computers started, and when the development of IC took place, the computers became less expensive, resulting in a increased demand of computers, and thus different kinds of computers were developed, out of which mainframes and mini computers are also two examples. Along with hardware developments, there was a development in operating system as well. We saw that operating systems were introduced in second generation. In third generation, operating systems became more advanced. Now the operating system became multitasking and multi-programming, just like today's operating systems. So we see the major developments of third generation. Major developments we can say them, major characteristics we can say them. The integrated circuit was the major technology, and introduction of IC reduced in enhancement in the computer in many ways. After it, we saw that different kinds of computers were introduced for business needs. We saw that operating systems also evolved with computers. The very important thing of third generation computer is first supercomputer. First supercomputer was developed in third generation of computers. It was known as CDC 6600. Now I can ask you, what is the meaning of this CDC? Though it is not in your syllabus, but I would like to tell you that CDC is standard for Corporate Data Computer Data Corporation, CDC. So it was the company who developed this first supercomputer. That is why it is known as CDC 6600. And the inventor of this first supercomputer, who is known as the father of supercomputer, was Dr. Simon Cray. So it can ask you, the external examiner can ask you in the Viva, that who was the inventor of first supercomputer, or who was the father of first supercomputer. You can answer him that, sir, Dr. Simon Cray was the father of first
supercomputer. Now, what were the important computers of third generation? Just like second generation, there were some important computers. IBM 360, which was a very popular computer, the most popular computer of third generation, and Honeywell 6000 series. I mentioned only two names so that you can remember them easily. You can relate the 3 in 360 with third generation, and you can relate the 6 in Honeywell 6000 series with third generation by multiplying 3 into 2. So we have covered the third generation of computers, we have covered all the important topics, and it's time to move to the fourth generation of computers. Fourth generation of computers are very reliable, powerful, small in size and portable. This fourth generation started in 1975 and still we are using these computers in our school labs or in post offices. So what is this microprocessor and what is the technology that marks the fourth generation? In fourth generation we used IC with LSI and VLSI technology. Now what does it mean? We have used IC in third generation. So why we have used IC in fourth generation, and how is this a technological shift? See, in third generation when we used IC, we integrated only 10 to 100 transistors in one chip. But with LSI and VLSI, we have been able to embed thousands of transistors in a small single chip. Now a small single chip of same size as of transistor can perform the function of thousands of transistors alone. So it made the computer more reliable, more powerful and small in size, and thus also portable like our laptops. So laptops are fourth generation computers. Microprocessors developed. Microprocessors is the main technology of fourth generation of computers. We identify fourth generation with development of microprocessors. Now what is a microprocessor? Microprocessor, you can see in the picture, it is a microprocessor, and I'm sure you all have seen this. If you have opened any computer, you can see a chip like this which is known as microprocessor. Before the microprocessors were invented, the tasks of computing was done by different parts, different components of computer, and it was a big box having certain different components doing different things. But in microprocessor, what happened is we were successful in embedding the entire CPU in a single chip. Means now this single chip can do all the functions that we have done in the previous generations, which were done using thousands of vacuum tubes. Now a single chip could do the same functions. So you see that microprocessor was a revolutionary technology and it marks the fourth generation. Now you are aware of this. As the generations are increasing, computers are becoming more reliable, powerful, small in size, portable, negligible power consumption and heat generation, because if the device is small, it is consuming less power, thus it will generate less heat. Different types of faster and high capacity secondary memory developed. Okay, this is something which is not very important, but you should know that the capacity of memory increased in fourth generation, because in the starting there was only the development of technologies, and then the components of computers also started developing, and we also observed that along with the hardware parts, softwares also start developing as we move from previous generation to next generation.
very less production cost, computers became household products. Now this is the fourth generation when computers reach homes. Since computers became very small, manufacturers produced the microprocessor on a very large scale, thus reducing the cost. And when the computers became very cheap and easily accessible, people started to purchase the computers for their personal use. Now we will see that when a computer becomes a household product, how it triggers the development of softwares. See, application softwares like databases and also games like word processors developed in fourth generation. Why? What caused this development? See, when computers became household product, when computers became very common, when every shopkeeper started to keep computer at his shop, then the companies think that not everyone wants to do scientific calculation with their computer. Not everyone has to do the data processing of consensus, population consensus. So different users have different needs. Some like to play games on computers, some wants to use databases to record their transactions, some wants to write letters on their computer, and some wants just to browse the internet. So different kinds of application softwares developed during fourth generation of computers. What is an application software? We will cover in next chapter, which is Introduction to Softwares. The important computers. There is no single important computers. The Pentium family of processors are the fourth generation of computers. In your schools, if there are old computers, you must have seen or you must have heard by the technical guy or the lab instructor that this computer is Pentium 4 or this computer is Core 2 Duo. So you should remember that Pentium family of processors belongs to fourth generation of computers. So let us have a quick revision of this slide once again. Microprocessors were the major technology of this generation. Computers became household product in fourth generation of computer. Application softwares developed in fourth generation. And also one important thing, computers became portable in fourth generation. And if anyone asks what is a fourth generation computer, give an example. So you will say that Pentium family of computers are fourth generation, or simply Pentium computers are fourth generation of computers. I hope everything is clear to you from fourth generation of computer. And if anyone asks any question from fourth generation of computer, you will be able to answer. One important thing, fourth generation are still used. I mentioned it earlier because we are still using these computers. These are not obsolete completely as yet. And now we will move to the fifth generation, which is very important and which is related to everything new that is happening in present computer science world. Fifth generation of computers. Fifth generation started in 1989 and is still in development. It is still evolving, still developing, and we are seeing the news, we are viewing the news of fifth generation concepts every day, whether it is AI, artificial intelligence, whether it is big data or parallel processing. So fifth generation is based on concept of AI or artificial intelligence. What is artificial intelligence? Though it is not in your syllabus, but artificial intelligence is a very popular topic. That is why I will explain it to you. Artificial intelligence means providing the intelligence to the computer. We know that we always need to provide an instruction to the computer. If we do not provide an instruction, the computer will not work. The idea behind AI is to develop the computers who can learn from their experience. Suppose there is a cat. Okay.
If the cat sees that you are giving milk to the cat, then the cat will come to your door, and it will learn that if he or she comes to your door, then he or she can get milk. Similarly, if a cat comes to your door and you are not an animal lover and you try to hit the cat will remember that if he or she goes to your door, then there is a chance, based on the past experience, that you will try to hit the cat, so the cat will not come. So I hope you have got the basic idea. Now let me try to elaborate. In artificial intelligence, we use a memory element just like our RAM or our hard disk. In this memory element, based on the previous interaction, the computer stores its data, and based on the previous interaction, it predicts or it understands what is the output of any input. The best example of AI that we use today are Google Assistant in your smartphones, Alexa in your smartphones, and Siri in your smartphones. These all are voice assistants and are the perfect example of artificial intelligence. Even though robots are also manufactured based on artificial intelligence. Principles of parallel processing and superconductivity are also used. So, what is parallel processing and what is superconductivity? When we covered von Neumann architecture, we saw that there is a single communication channel between a processor and a memory device, and it limits the capability of a processor. So parallel processing tries to break this bottleneck. If we use multiple processors, multiple computer processors or microprocessors or CPUs to do a same task together in 3 different threads, or we suppose we have a program in which we have to do 3 functions, and instead of using a single CPU, we try to run all the 3 different functions on 3 different CPUs or processors, then we know that it will increase the speed. So this is the concept of parallel processing. In parallel processing, we use multiple CPUs to run a task. Thus, that increases the performance and speed of task. Now, what is the principle of superconductivity? We know that in a computer, the signal is basically the electric signal. The data or signals are sent in the form of electric signals. And we know that from physics classes in your schools, you must have heard the concept of the resistance and conductivity. So every wire or every medium has some conductivity or some resistance. So superconductivity is the concept where we try to eliminate any kind of resistance from wire. Thus, what will happen if there is no resistance in the wire? Then the signal can run or can transport from one point to another in literally no time. This is the concept of superconductivity. If the signal runs very fast, then this will surely increase the speed of the processing, and thus the computer's efficiency will be increased. So I hope the concept of AI, concept of parallel processing and superconductivity are clear to you. These will never be asked in your computer at class 11 or 12, but I think that you should be aware of them so that when you go to higher classes in your college, you will be aware of the topics which you will read. Next concept is biometrics. Biometrics is something that you all are aware of. When you use the fingerprint sensor in your phone to unlock it, you are using biometrics. When you are using your Aadhaar card
for validating a transaction, or for your bank purposes, you are using biometrics. Now, what is the biometrics? What does it mean? We know that how do we use biometrics, but we should know what is the idea behind, what is the principle behind biometrics. In biometrics, we record certain biological aspect of our human identity, like what are our biological identification, what are our biological aspects. Our fingerprints are our biological aspects. Our voice is also something which is our biological property, and many things like our DNA or our blood sample, or we can say even our pattern of our teeth. So these all are our biological properties. In biometrics, we record this data, and later we use this data to validate any transaction or any function. For example, if I try to provide an illustration, or I should provide you a real life scenario, is when you unlock your phone screen. See, you cannot just touch the phone and unlock any phone. First, your fingerprint must be recorded in that phone. Only then you will be able to unlock it with your fingerprint. So you understand that this biometrics, how this biometrics is used. First, the information is recorded, and then this information is used to validate the input. Suppose in your phone only your fingerprint is recorded, and when your friend comes, he tries to put his fingerprint on the sensor, the phone will not get unlocked. Why? Because his biological data is not recorded in the phone. This is the concept behind biometrics. Biometrics are used for voice recognition, visual recognition, and many countless things. Next concept is Internet of Things. What is Internet of Things, or IoT? IoT, or Internet of Things, is a new concept, and still I will try to explain it to you. We all are aware of internet. If we go by definition, it is something different, but if we say network, a simple network, a human network, like we ask, does this person is in your network? Do you know him? So that is what is a network. Now, what is Internet of Things or network of things? We develop certain devices which are able to transfer data to each other without human interaction. See, when we go to a mall, we buy a product, and on that product, suppose we buy a jacket from a showroom in a mall, there is a RFID tag attached to that jacket that generates some sort of signal which is read by the RFID detector. So we see that in Internet of Things, we use many devices, many smart devices, which could transfer some data to each other and do some unit of work. This concept, this Internet of Things concept, is now used to make smart cities. You must have heard that there are certain smart cities which are being developed in India, like Bhubaneswar, or there is one called Dholera in Gujarat. So these are some examples of smart city, and smart cities will use the Internet of Things so that machines or devices could communicate with each other by transferring some signals and do some unit of work. Next important concept is virtual reality, and the very simple example of virtual reality is the 3D movies. When you go to watch a 3D movie, if you haven't, then I will explain it to you in another way, but if you have, then you will see, when you watch a 3D movie using the 3D glasses, you feel that you are in the environment
of the movie. So virtual reality is is used for advanced interaction. What virtual reality does is it creates an environment, it creates an illusion of an environment which is physically not present around you. Means हमें लगता है कि हम एक एनवायरनमेंट में हैं, हमें पूरा ऐसा फील आता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट हमारे आसपास नहीं होता. वही है वर्चुअल रियलिटी. आई होप you have understand all these terms. I will repeat all of them once again for your convenience in Hindi, so that अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए हिंदी में रिपीट करता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहला कंसेप्ट है जो 5th जनरेशन में हम यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि अगर हम कुछ ऐसी मशीन्स बनाएं, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू या प्रीवियस इंटरेक्शन के बेसिस पे अगला स्टेप लें, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास गूगल का हेलो गूगल है, जिसे हम हेलो गूगल ही कहते हैं, और हमारे पास अमेज़ॉन का एलेक्सा है, हमारे पास सीरी है. तो ये जो वॉइस असिस्टेंट है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. हम जैसे ही कुछ बोलते हैं, जैसे ही कुछ कमांड देते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इस कमांड का मतलब क्या है, और उसके बेसिस पे वो कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. अगर हम कुछ ऐसा इनपुट उन वॉइस असिस्टेंट को दें जो कि पहले से डेटाबेस में स्टोर नहीं है, तो उन्हें उसका आइडिया नहीं होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर हम फिर से वही कमांड दें तो वो फिर भी कुछ ना कुछ आउटपुट हमें प्रीवियस इंटरेक्शन के बेसिस पे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक मेमोरी एलिमेंट का यूज़ होता है, जिसमें हम प्रीवियस इंटरेक्शंस का डेटा स्टोर करते हैं, और जब हम कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, या कंप्यूटर खुद से कुछ सिनेरियो को डिटेक्ट करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ वॉइस को डिटेक्ट करता है, तो वो उसके बेसिस पे आउटपुट खुद से प्रोवाइड करता है. बेसिकली कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाने का तरीका है ये, जिससे कि हम और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें कंप्यूटर्स का और उन्हें और ज़्यादा डेवलप कर सकें. उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग है और सुपर कंडक्टिविटी है. पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम एक प्रोसेसर की जगह मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज़ करते हैं. जैसे हमने देखा कि 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया. माइक्रो प्रोसेसर आया तो कंप्यूटर्स में एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगता है. लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगा दें तो क्या होगा? अगर हम बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगा दें तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमें बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी, बहुत ही हाई स्पीड मिलेगी. यही कंसेप्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग का, और जिससे कि बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होती हैं, बहुत डेटा प्रोसेसिंग होती है बिग डेटा वगैरह में, वो बहुत इजीली शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी. सुपर कंडक्टिविटी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है. सुपर कंडक्टिविटी में प्रिंसिपल ये है कि हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं कंप्यूटर्स के अंदर, हम देखते हैं जब भी हम कोई कंप्यूटिंग डिवाइस ओपन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी वायर्स तो हैं ही, ठीक है, भले ही वो सर्किट में एम्बेडेड हो, भले ही वो लूज वायर्स हों. तो जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, और हर एक वायर का कुछ ना कुछ भले ही बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस तो होता ही है. अगर हम उस टोटल रेजिस्टेंस को, जो थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है, उसे भी पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें किसी तरह से, तो हमें एक बहुत ही, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे, और हमारी जो प्रोसेसिंग है वो और ज़्यादा फास्ट होगी. यही कंसेप्ट है सुपर कंडक्टिविटी का. बायोमेट्रिक्स तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ. अगर हमारी कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे रेटिना का आई स्कैन, हमारी वॉइस या हमारे चेहरे के फीचर्स, इनका हम यूज़ करते हैं किसी कंप्यूटिंग के लिए, किसी वैलिडेशन के लिए, तो उसे हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं. बायोमेट्रिक्स में पहले ये डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसी के बाद हम इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए. तो बेसिकली बायोमेट्रिक्स में भी हम मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं. अगला कंसेप्ट है
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, बहुत ही रीसेंट कंसेप्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम ऐसी डिवाइसेस को बनाने की कोशिश करते हैं जो एक दूसरे से विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन इंटरेक्ट कर सके। मतलब कोई ह्यूमन है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, डिवाइसेस एक दूसरे को सिग्नल सेंड करें और उस सिग्नल के बेसिस पे कुछ ना कुछ वैलिडेशन करें, कुछ ना कुछ मैसेज ट्रांसफ़र करें और कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करें। जैसे हमारा टीवी का रिमोट है, हालांकि ये आईओटी का एग्जांपल नहीं है पर मैं आपको फिर भी एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। हमारा टीवी का रिमोट है, उसमें हम बटन दबाते हैं तो कुछ इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं जिसे कि रिसीवर रिसीव करता है और चैनल्स को चेंज करता है या वॉल्यूम अप डाउन करता है या अदर फंक्शंस करता है। सपोज़ कि हम एक ऐसा रिमोट बनाएं जो कि अपने आप ही ये सारे फंक्शंस करें, बटन दबाने वाले फंक्शन जो भी हम करते हैं वो अपने आप करें किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, लाइक टेम्परेचर के बेसिस पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है या फिर टाइम क्या हो रहा है उस बेसिस पे। और वो जो डिवाइस है, रिमोट है जो, वो टीवी के रिसीवर से इंटरेक्ट कर रहा है अपने आप विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। हम बटन नहीं दबा रहे, वो खुद से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया दो डिवाइसेस के बीच में। और ऐसी अगर बहुत सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इसी तरह से इंटरेक्शन कर रही हैं खुद से किसी सिग्नल्स के थ्रू, तो वो एक नेटवर्क बन जाता है और उसी नेटवर्क को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। थिंग्स यानी कि चीज़ें, यानी कि डिवाइसेस, और इंटरनेट यानी कि इंटरकनेक्शन। अगला टॉपिक जो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का फंडा ये है, प्रिंसिपल ये है कि वर्चुअल रियलिटी में हम एक ऐसे इन्वायरमेंट का इल्यूज़न क्रिएट करते हैं जो कि एक्चुअल में हमारे आसपास एग्जिस्टिंग नहीं है। इसका सबसे अच्छा और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है 3D मूवीज़। जब हम 3D ग्लासेस लगा के 3D मूवीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मूवी के अंदर ही उसी के इन्वायरमेंट में हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में तो होता नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी एक बहुत ही एडवांस्ड इंटरेक्शन का टूल है और यहाँ पे हम एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट का जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके पास VR ग्लासेस भी हैं जिन्हें गूगल कार्डबोर्ड भी कहते हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में आपके सामने आएंगी और आप उन्हें सीखते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा 5th जनरेशन भी कंप्लीट होता है। और इम्पॉर्टेंट जो कंप्यूटर्स हैं, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर कंप्यूटर्स। पैरेलल प्रोसेसिंग में मैंने बताया था कि हमें काफ़ी सारे प्रोसेसर चाहिए। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर को यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहते हैं। और अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसमें मल्टी कोर एक्चुअली मल्टी प्रोसेसर से थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है। मल्टी प्रोसेसर में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को एक कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और मल्टी कोर में क्या होता है कि प्रोसेसर तो एक ही रहता है लेकिन हम उस प्रोसेसर के अंदर भी एक से ज़्यादा छोटे पार्टीशन करते हैं जिन्हें हम कोर्स कहते हैं। तो इसमें थोड़ा कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्टर होता है, इसलिए मल्टी कोर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है मल्टी प्रोसेसर में। और ये दोनों ही जो कंप्यूटर्स हैं मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर्स, जैसे आपके i3, i5, i7, ये सारी जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है इस पूरे लेक्चर में। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप एक बार ध्यान से देखिए। ये पूरे लेक्चर की समरी है। इसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी मेजर टेक्नोलॉजी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कौन कौन सा मेजर कंप्यूटर था पर्टिकुलर जनरेशन का। और इसी के साथ हमारा लेक्चर का जो पढ़ने वाला पार्ट था वो ख़त्म होता है और यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर पार्ट पे पहुँच गए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अटैम्प्ट करें और ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में इनके आंसर्स प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। आपने पढ़ तो लिया है लेकिन जब तक आप उसे राइट नहीं करेंगे, जब तक आप एक बार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ जो है वो कंक्रीट नहीं होंगी। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट try to give answer to all these questions in the comment box
or you can also join the Telegram channel where you can discuss or if you have any query, you can ask any query or any doubt on that channel. So this is the end of lecture, and I hope that you have learned something new, you have learned some concepts and principles, and you have gained something from this lecture. So let's meet in the next lecture. Till then, bye bye.